we started the discussion of not audible. Am I audible? Yeah, clearly audible. Yeah. Right now, our topic is going on. What is the name of topic? Young heel vessel. अभी हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? Young cow my or the young heel vessel. And the master point is urinary bladder 62. इसका मास्टर पॉइंट कौन है? Urinary bladder 62 is the master point, right? In the previous class, we were discussing that young heel vessel having its own path. इसका अपना एक रास्ता, एक अपना पाथ है, एक मार्ग है. Like we have all the meridians, and the different meridian having different path. We know lungs meridian having different path. लंग मेरिडियन का अपना रास्ता है कि लंग 1 से स्टार्ट होता है और लंग 11 पर खत्म होता है. हार्ट मेरिडियन का अपना एक पाथ है. हर एक मेरिडियन का अपना एक पाथवे है. इन द सेम वे young heel vessel is also having pathway. Definitely there is not a single point belong to young heel vessel. All the points are 1 point from UV meridian, 1 point from SI meridian, some point from stomach meridian. तो पॉइंट तो सारे इधर उधर के हैं. अलग अलग मेरिडियन के पॉइंट उधार लिए गए हैं और उधार के पॉइंट्स को लेकर इसने एक अपना रास्ता बना लिया है. So young heel vessel is having its own path, right? In the last class, we were discussing many things about the young heel vessel. The first thing we have discussed, the young heel vessel targeting the head region. ये हमारे सिर को टारगेट करता है. It is targeting the head. Expel unwanted wind, unwanted heat, unwanted energies from the head. On the other side, we talk about the yin heel vessel. The master point is kidney 6, targeting lower abdomen and the genitals. So if we are making the body like this, so this upper part is targeted by the young heel vessel, and this lower part, abdomen and the genital part, targeted by the yin heel vessel, right? This is the discussion of last class. So I'm doing quick revision. Then if we come back to the young heel vessel or the young cow mai, the master point urinary bladder 62 and the couple point SI3. इसका मास्टर पॉइंट UV 62 और कपल पॉइंट SI3 है. So if we are having excessive chi in the head region, we can expel. If we are having excessive wind in the head region, we can expel. If we are having a strain of in the head and brain, we can expel. And if someone is getting fits because of the excessive electric signal in the brain, we can expel. हम चारों चीजों को बाहर फेंक सकते हैं. अगर हमारे हेड में ऊर्जा बढ़ गई है तो सिर फटा जा रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हेडेक हो रहा है, या सिर की कोई नस फट जाएगी. विंड बढ़ गई है, सिर में हवा लग गई है, ठंडी गर्मी लग गई है, सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड का आक्रमण भी हो गया है, हम कहते हैं कि विंड अटैक. और कोई स्ट्रेन हो गया है, मेंटल स्ट्रेन, आई स्ट्रेन और एक्सेसिव एनर्जीज के कारण, एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी के कारण फिट्स आ रहे हैं. If these all conditions we can expel via the urinary bladder 62.
So UV62 will cool down and the calm down head region. हमारे सिर को ये cool down और calm down करने वाला बिंदु है, right? If there is an external wind invasion creating the facial paralysis, we can use the UV62 and we can expel the wind. एक्सटर्नल विंड का आक्रमण होता है तो फेशियल पैरालिसिस होती है, और इंटरनल विंड का आक्रमण होता है तो आधे शरीर की पैरालिसिस होती है, हेमीप्लेजिया. सो एक्सटर्नल विंड इज invading or doing the facial paralysis, we can use this point and we can expel the external wind. And if there is internal wind, whatever, if the wind is too much in the head region, wind is too much, heat is too much, something is too much in the head region, anything is too much in the head region, we can expel with the UV62. If the internal wind invasion, like creating paralysis, monoplegia, half body paralysis of the hemiplegia, diplegia, paraplegia, quadriplegia, various type of the paralysis, we can expel with the UV62. हम UV62 के माध्यम से expel कर सकते हैं. Aphasia is also the symptom because of the facial, because of the hemiplegia, because of the stroke. So we can work. And the severe dizziness, it's a wonderful point, one of the great point. Urinary bladder 62 as a master point and SI3 as a couple point, हम इन दोनों को ट्रीट कर सकते हैं, राइट? अगर किसी को चक्कर आते हैं तो हम UV62 के माध्यम से उसके चक्कर पर काम कर सकते हैं. इट्स वन ऑफ द ग्रेट पॉइंट फॉर दिस पर्पज. सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड whether the facial paralysis or the half body paralysis or the any type of the paralysis means there is an external wind attack or the internal wind attack, any type of the wind attack, we can use this point and expel the wind, external wind, internal wind, हम सभी प्रकार की wind को expel कर सकते हैं. This is one of the great point. So wind stroke is the result of some problem in the blood vessels of the brain. हमारे brain की blood vessels में कोई problem हो जाए, there is a bleeding, there is a hemorrhage, there is a clots, something wrong in the blood vessels of the brain, creating a stroke or the wind stroke. Again, we can work and we can expel the unwanted wind, we can expel the unwanted clots, we can expel the unwanted depositions from the head region. So it's a very good point for the head region or the wind stroke. Now, the same thing I would like to discuss in a different way. Suppose if the person is getting invasion of external wind heat or the external wind cold, then what is the symptom? Sneezing, headache, runny nose, throat pain, stiff neck. जब भी हमारे ऊपर सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड का आक्रमण होता है, हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसे, कि भाई विंड का आक्रमण हो गया, एक्सटर्नल विंड हैज अटैक्ड और some bacteria has attacked, some flu bacteria has attacked. We already know, as per the acupuncture, all the bacteria are bind, all the virus are bind, all the pathogens are bind. If they attack, then we are telling there is an attack of external bind, right? So if there is an attack of external bind heat, external attack of bind cold, ठंडी हवा में गए सर्दी लग गई, गर्म लू में गए फीवर आ गया, any type of the external bind heat or the wind cold attack, गर्दन अकड़ गई, शरीर दर्द कर रहा है, फीवर जैसा लग रहा है, नाक से पानी बह रहा है, गले में दर्द कर रहा है, these all symptoms or the first sign of the wind attack, whether the stiffness in the neck or the running nose, tearing from the eyes, severe headache and feverish feeling or the fever, we are telling okay, wind attack. How to expel the wind? Wind को हम कैसे expel करें? So we can expel the wind using this point. हम इसका प्रयोग करके wind को बाहर फेंक सकते हैं. We can expel the wind by using this point. Then it's not only about the eyes. ये केवल
इट्स नॉट ओनली अबाउट द हेड, ये केवल अब हेड की बात नहीं है। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओनली द हेड रीजन, ये सिर्फ हेड रीजन की बात नहीं है। एनी थिंग्स इन द हेड रीजन, लाइक इफ देयर इज a high pressure in the eyes, there is a glaucoma, something wrong in the head region, begin work. There is a high pressure in the eyes, which is called glaucoma, or the high intraocular pressure, which is called glaucoma. How to work on the glaucoma? Expel the unwanted pressure, expel the unwanted energies from the eyes. So urinary bladder 62 is very good point even for glaucoma or the excessive pressure in the eyes. Some person is having too much energies or the feeling of mania or madness. एक व्यक्ति पागलपन की तरह काम कर रहा है, एक पागलपन जैसा व्यवहार कर रहा है, उसके दिमाग में भूत जैसा चढ़ा हुआ है और चीजों को तोड़ रहा है, फेंक रहा है, मार रहा है, उसके दिमाग में गर्मी चढ़ी हुई है, पागलपन चढ़ा हुआ है. द पर्सन इज बिहेविंग लाइक ए मैड. We can work with the urinary bladder 62. It's a wonderful point to expel the unwanted energies from the head region. Epileptic fits is also because of the excessive electric signal of the brain. We know there are, when one neuron supply message to the another neuron, so the message is passing with the help of neurotransmitter. The message is going, the signals are going from one neuron to another neuron in the brain. जब हम नॉर्मल क्या बोलते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जब मैसेज, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जब मैसेज पास होता है, कैसे पास होता है? मैसेज गो in the form of electric signal. When this electric signal are little higher than the normal person is getting epilepsy. Okay. Anyway, epilepsy is the condition of the brain. We are considering the excessive energies of the brain. So we are working with the help of urinary bladder 62. हम urinary bladder 62 के माध्यम से इस पर वर्क करते हैं, right? So that is this condition, epileptic fits. Now we talk about the torticollis. Torticollis is the condition. What is the torticollis? So torticollis is the condition you might be knowing. There is a muscle called sternocleidomastoid muscle. हमारे गर्दन में मसल पाई जाती है और ये टाइट हो जाती है. We can see this muscle here. This is the muscle. We can see here. This is the muscle. This is the muscle called sternocleidomastoid muscle. When the one-sided muscle is very, very tight. जब एक तरफ की मसल बहुत टाइट हो जाती है, this SCM muscle is very tight, it's creating torticollis. Torticollis. So now, how to work on in this condition? We can see the head is turning on the one side. कैसे? सिर एक तरफ मुड़ गया. This is called torticollis. We are expelling the unwanted energies of the SCM with the help of urinary bladder 62. अभी हम देखेंगे कि आखिरकार UV62 इस पर काम क्यों करता है. आखिरकार UV62 जिस को बिलोंग करता है, दैट इज अ यांग हील वेसल. सो यांग हील वेसल पासिंग फ्रॉम दिस रूट वी विल सी शॉर्टली. सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग the torticollis and we can work with the help of UV62. And regarding the sciatica pain, we will be having more understanding about this. If the sciatica pain is there, whether on the back side or in the lateral side, चाहे urinary bladder meridian में हो और gallbladder meridian में हो, तो sciatica pain in the UV meridian or the gallbladder meridian, we can work with the help of UV62. Shortly, we will understand why this point working on the sciatica point. And excessive sweating. This is also unwanted excessive heat. So over sweating, we can use this point and we can balance the sweating. हम पसीना निकलना नॉर्मल कर सकते हैं. और हमने पिछली क्लास में दो बातें और समझी थी. In the last class, we also have understood. Number one, myopia. If the person is not able to see the far object,
इफ द पर्सन दूर की चीजें नहीं देख पाता, पास की चीजें दिख जाती हैं, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती, द पर्सन इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, द फार ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मायोपिया. So this young heel vessel is very good for this. We can treat this point urinary bladder 62 for myopia. जब हाइपरमेट्रोपिया की बात आएगी तो फिर वहां किडनी 6 आ जाएगा. But right now we are talking about the myopia when we can't see far object. Then we are using urinary bladder 62 as a master point and SI3 is a couple point. Master point will be on the master side, couple point will be on the couple side. Then if the person is overexcited, we can balance the energy of that person. Why? UB62. So finally, I will tell you UB62 is the point who is cooling down the system, especially head and brain region, who is calming down the nervous system. So if you want to cool down, if you want to calm down, you can use urinary bladder 62. ये हमने पिछली क्लास में समझा था. अब हम आगे की बात करेंगे. Is it clear, everyone? Clear now? Okay. Now, so let's see. There are many other names. Because right now we are talking about the young heel vessel. हम young heel vessel की बात कर रहे हैं. उसके बाद हम yin heel vessel की बात करेंगे. Right? Right now we are talking about the young heel vessel. Then we'll talk about the yin heel vessel. It means the master point of the young heel vessel is urinary bladder 62. And the master point of yin heel vessel kidney 6. अगर हम दोनों की बात करें पहले मिलाकर, if we talk about both, so let's see here. If we're talking about the two coy channel or the heel vessel, so they are the common name. What is the name? Bridge channel. Bridge channel. Vessel of one's stance. What is the meaning of that? We will understand. One's stance. The meaning of stance, जैसे कोई कहते हैं एक पैर पे खड़ा है ना, one leg stance. If the person is standing on one leg, two leg stance. So we'll discuss why we are telling vessel of one's stance. Polarization of yin and yang, we know the urinary bladder 62 is the yang and the kidney 6 is the yin. So one is the yang heel vessel, that is the yang, and one is the yin heel vessel, that is yin. And the vessel holding pathology, all the four are having very special meaning. इन चारों का बहुत ही स्पेशल मीनिंग है. Vessel holding pathology and all, right? So we'll understand slowly and one by one. Let's talk about this. Now, quickly I will tell you these things, but we will explore this thing. हम इसको explore करें. चलिए पहले हम explore करते हैं, फिर हम इसे समझेंगे, right? So let's talk about the young heel vessel. दोनों की पहले हम बात करें. दोनों मिलजुल के काम करते हैं. दोनों मिलजुल के काम, जैसे कि ये मेरा हाथ है. अगर मैंने स्ट्रेच किया इधर, if I'm pulling the hand, suppose if I'm pulling the hand like this, you can see there is a stretching happening here, right? And this is getting relaxed. ये relax हो गया. चलिए यहाँ देखिए. If I'm doing like this, so the stretching happening here, we can see the stretching here. And this is contracted or relaxed. So what is happening if we talk about the yin heel vessel and the yang heel vessel? जब एक टेंस होगी तो दूसरी रिलैक्स हो जाएगी.
राइट। एक टेंस होगी तो दूसरी रिलैक्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टर्निंग माई रिस्ट लाइक दिस, now you can see the wrinkles and this relaxed, but here I can feel lots of tension. I can feel the pain here, lots of tension and the pain here, but other side it's relaxed. If I do like this, then I can feel the stretching here, and here is the relax. So yin heel vessel and the yang heel vessel are working like a coupling. If one side is stressed, अगर एक साइड टेंस है तो दूसरी साइड रिलैक्स हो जाएगी। वन मोर एग्जांपल आई बिलीव, सपोज लुक एट हियर, मेरा पैर देखिए आप एक बार, एक ही मिनट, लुक एट माय लेग हियर। सपोज so this is my leg, you can see. If this outer side is belong to yang heel vessel, we know the urinary bladder 62 is the outer side, so lateral side belong to the yang heel vessel, and the inner side belong to the yin heel vessel. We know the master point is kidney 6 here, and here the master point UV 62. If the outer side belong to the yang heel vessel and the inner side belong to the yin heel vessel, so if there is a tension in the outer side, अगर बाहर टेंशन हो तो अंदर रिलैक्स हो जाएगी। We can understand with the help of feet, हम फीट के उदाहरण से समझ सकते हैं। Like this is my feet. Suppose if I am doing like this, you can see stretch is coming here. You can do, आप करके देख सकते हैं। अगर मैंने ऐसे किया, ये बाहर का पार्ट खींच रहा है, I can feel the stretching, inner part is relaxed, right? Inner part is relaxed. So on the one side, if there is a, we can see कि एक तरफ जो भी एक्शन होगा, दूसरी तरफ उसका अपोजिट एक्शन होगा. So let's see in the image here. I will give you the example of in the other image. तो eversion क्या होता है? Eversion. What is the eversion of the foot? And what is the inversion of the foot? क्या होता है? बताइए. What is eversion and what is inversion of the foot? So look at this image. Yes, you know, everyone knows now. Very good. So look at here now. If we look at this image, when foot is going in, it is called inversion. यानी पैर के अंगूठे की तरफ का इन जा रहा है. It is called inversion. And when the small toe side going up, it is called eversion. अब ये बताइए कि अगर UV62 वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? If the yang heel vessel who is in the outer side is contracting, what will happen? Can you tell me? Yang heel vessel बाहर की ओर है. अगर उसने कॉन्ट्रैक्शन किया तो क्या होगा? सोचिए. eversion होगा. Eversion होगा, right? So that's why sometimes what's happening, if there is excessive energy in the yang heel vessel, then foot is turning in the eversion. नहीं डेफिशिएंसी नहीं. मान लो यांग किसी का यांग हील वेसल एक्सेसिव हो गया. आपने किसी के पैर देखे, किसी के पैर ऐसे होते हैं और किसी के पैर ऐसे होते हैं ना. अब मानो किसी के पैर, so let's see here. So now you are looking some patient. आपने किसी पेशेंट को देखा,
Maybe the patient is suffering from the paralysis. So I will show you. I'm showing the foot of one patient who is suffering with the paralysis, right? So you have to see this foot and tell me what is the condition of this foot. ये एक patient है आपके पास. It's not only paralysis, maybe another condition, maybe some peroneal nerve injury. इस व्यक्ति का foot कोई भी condition क्यों ना हो. Can you see the image number 3 here? Can you tell me what is the condition of foot here? इस पैर में क्या condition है? ये eversion में गया कि inversion में गया है? Third number feet here. Eversion में है कि inversion में है? So this is in the inversion, यानी अंदर वाला tight है. We can consider the अंदर है yin heel vessel और बाहर है yang heel vessel. Remember, tight means excessive. Tight means excessive. अंदर का tight है, inner is tight. So foot is going in the inversion. तो foot किस condition में जा रहा है? Inversion में जा रहा है. Is it clear or not? तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू. द पर्सन इज जस्ट दिस पर्सन हु इज सफरिंग विद द इन्वर्जन, जिसका फुट अंदर की ओर जा रहा है, हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसमें? व्हाट ट्रीटमेंट वी माइट डू फॉर दिस पेशेंट? प्लीज टेल. बताइए, थोड़ा लाइट गई है. इस पेशेंट में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? Even you can unmute yourself and tell me what treatment you might do here. Anyone? So we'll do UV62 tone because tension is there. So we will do UV62 tone. Yeah, you are right. Can you explain why? Because there is a tension. So we'll and sedate tension and kidney 6 area. So we can So we'll sedate. Yeah, perfect, perfect. So what we'll do, we can consider very normally because outer side is beak, right? Yes, sir. So outer side is beak and inner side is more strong. So the foot is going in the inversion, right? So we'll tonify Yes, the sir. UB62 and we'll sedate the kidney 6, right? कि देखो बाहर की साइड Yes, sir. कमजोर है, यानी UB62 वाला चैनल कमजोर है, अंदर की साइड स्ट्रांग है, किडनी 6 स्ट्रांग है. तो पैर अंदर चला गया, यानी यिन ज्यादा है, पैर अंदर चला गया, तो हम क्या करेंगे? इसे हम बाहर की तरफ लाने की कोशिश करेंगे. सो हाउ विल ब्रिंग इट? व्हाई? डूइंग द टॉनिफिकेशन ऑफ UB62. वेरी गुड. सो UB62 tone and kidney 6 sedate. This is the treatment. Kidney 6 sedate. All are agree? क्या सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं? एंड वी विल डू ऑन द सेम लेग, इन सेम लेग, यानी सेम साइड. वी कैन टेल वी डू इन द सेम साइड. क्या सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं? कोई ऐसा है जो एग्री ना करता हो? सर मेल हो या फीमेल दोनों को उसी साइड बांधना है जिस पैर में हाँ, प्रॉब्लम? इसमें हम जहां प्रॉब्लम होगी वहीं करेंगे, राइट? सर अगर दोनों पैर अंदर की तरफ है तो फिर दोनों साइड्स में UB62 टोन करके K6 सेलेक्ट कर सकते हैं सर, बाइलैटरल कर सकते हैं. यस, हमें जिस भी प्रॉब्लम होगी तो करना होगा. अगर दोनों पैर में प्रॉब्लम होगी तो हम दोनों ओर करेंगे. वी विल डू बोथ साइड. Wherever the problem is, we will do both sides. Sir, Okay. Sir, kidney 6 क्यों sir, is there करें? any specific reason? What? Hello? Sir, is there any specific reason why it is moving only towards strengthen point, sir? See, right now, if the person is suffering with a paralysis, we can see the foot is becoming like that. Because the tone is going, then
we can see the various patient is suffering with the eversion of the feet. Some patients suffering with the inversion of the feet. It vary person to person. तो अभी तो हम ये सीख रहे हैं हम कब क्या करेंगे. हमने पेशेंट का फूड देखा और फूड देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें इसके फूड को सही करना है. तो हम कैसे सही करेंगे. दिस इज अवर नाउ. वन मोर पेशेंट. सर किडनी 6 भी सेम साइड तो सेडेशन होगा. Yes, everything will remain on the same. किडनी 6 क्यों करेंगे. किडनी Okay. डोंट कैन. पहले ये दूसरा बताइए आप, फिर मैं आपको बताता हूँ. लुक एट दिस अनदर पेशेंट. इसके इवर्जन में है कि इन्वर्जन में. बेदर दिस इन्वर्जन इवर्जन. ये क्या है बताइए. Eversions. Eversions. इन्वर्जन और इवर्जन. इन्वर्जन. दिस इज ऑल्सो इन्वर्जन. ये भी इन्वर्जन Inversion. गए हैं. तो अंदर का हम जानते हैं कि हमारे अंदर का जो मेरिडियन है वो है यिन हील वेसल. हमारे बाहर का जो मेरिडियन है वो है यांग हील वेसल. The master point of the outer side is UB62 and the master point is inner side is kidney 6, right? So in this condition also this inner is stronger, inner is excessive and outer is deficient. सर अगर किसी पेशेंट की पैर की फिंगर्स ऊपर को जा रही हैं अभी हाँ, तो क्या कंडीशन मानेंगे सर. हाँ बताऊंगा. पहले मैं आपको पूछ रहा हूँ. ऊपर को पुल हो रही हैं फिंगर्स. I will take every example, but first you have to tell what I'm asking you, right? ओके Let सर. me go step by step. Yeah. I will discuss everything. So first try to understand, because what I'm telling you, right? So this is the yang heel vessel, this is the yin heel vessel. Okay. So the inner is excessive. So what we'll do? UB62 tone again and kidney 6 sided. Right? We will do this. Exactly we will do. How many % understood? This is also inversion. ये भी inversion है और पहले भी inversion था. This is also inversion of foot. सर अंदर का साइड टाइट है ना. क्यों लेंगे. अंदर गया है ना. अंदर से उठ रहा है ना. देखो अगर छोटी उंगली की तरफ उठेगा वो इवर्जन. मैं आपको इवर्जन की इमेज दिखाऊंगा. ये भी देखो इन्वर्जन था और वो भी इन्वर्जन है ना. इवर्जन क्या होता है. इवर्जन में पैर कैसा हो जाता है. हाउ द इवर्जन फुट लुक लाइक. आई विल टेल यू. बाहर का टाइट हो जाएगा ना. देखो अब मैं इवर्जन आपको बताता हूँ. कई लोगों को जो फ्लैट फुट होता है ना, फ्लैट फुट, कई बार ऐसे लोगों को हम देखते हैं इवर्जन होता है. आई विल शो यू वन इमेज. इफ यू सी वेरी केयरफुली, I will show you one image. I will show you two image so that you can do the comparison. मैं आपको चलिए दो इमेज दिखाता हूँ इवर्जन की, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं. One, give me one. Yeah. चल पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक जनरल. लेट्स सी दिस. देखो इस इमेज को देखिए. चलो ये देखिए. Look at this image. This one. This is the inversion when the great toe is lifting. This is called inversion. When small toe is lifting, it is called eversion. यानी आप क्या कर सकते हैं कि स्मॉल टो पर लिख दीजिए आई. स्मॉल टो मतलब आई. ये उठेगा तो होगा इन्वर्जन. Inversion. And when there is a lifting or small toe side, that is called eversion. Okay. So now we can see this is a eversion. Now this patient, we can see
हैविंग फ्लैट फुट, फ्लैट फुट में ज्यादातर क्या होता है, इवर्जन हो जाता है, तो पूरा जो आर्च है वो जमीन के संपर्क में आ गया। नाउ कैन यू सी दिस पेशेंट इज हैविंग इवर्जन, कैन यू अंडरस्टैंड दिस इवर्जन? Yes, sir. आपको लग रहा होगा ना कि Yes, देखो sir. कैसे पैर ऐसे साइड Yes, से sir. ऊपर की ओर उठ रहा है, राइट? Yes, sir. So this is the eversion condition. Now, if you see, the outer side is tight. Now, we can consider the outer side is tight. The young heel vessel is tight. In this condition, if we see, the young heel vessel side is tight, and the inner side means yin heel vessel side is deficient. The outer side is tight. And inner side is flaccid. बाहर की तरफ टाइट है, टेंस है, बाहर की तरफ टाइट है, we can consider, or we can tell excessive. The inner side is in heel vessel is deficient. तभी तो पैर बाहर जा रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि बाहर का मेरिडियन टाइट होने से पैर को बाहर खींच रहा है। व्हाट विल डू नाउ? कैन यू टेल मी व्हाट इज द ट्रीटमेंट नाउ? क्या करेंगे बताइए? Kidney 6 stone, QB 62. UB 62 sedate. अब बताइए कितने लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। इसके बाद हम यांग हील वेसल का रूट समझने वाले हैं। रूट समझने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि पैर को उठाने में क्या करेंगे, लेटरल से उठाने में क्या होगा। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग एज सून एज यू अंडरस्टैंड द रूट ऑफ द यांग हील वेसल। सर प्लीज बताएं कि किडनी 6 क्यों लेते हैं? किडनी 6 दोनों सीसो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल दो टीम है, कबड्डी खेल रही है, एक इधर एक उधर, एक टीम जीत रही है, एक हार रही है, हमें बैलेंस करना है। तो हम जीतने वाली को हराएंगे और हराने वाली को जिताएंगे, ये तो करेंगे ना। इट्स समथिंग लाइक दैट कि दो पार्टी हैं, उधर ज्यादा स्ट्रांग लोग हैं, इधर कमजोर लोग हैं, तो कमजोर की तरफ हम टोनिफा करेंगे और जो ताकतवर है उसे साइड करेंगे। तो दोनों उल्टे ही तो काम कर रहे हैं, जैसे ऐसा है, ये समझिए। एक तरफ UB62 और एक तरफ किडनी 6। UB62 ऊपर जा रहा है तो किडनी नीचे जा रहा है, तो हम इसे सेडेट करेंगे तो इसे टोनिफा करेंगे, यानी दोनों उल्टे ही तो हैं। अगर पैर के बाहर को UB62 कवर कर रहा है तो पैर के अंदर को किडनी 6 कवर कर रहा है। इमेजिन करिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, ओके सर, कोई कठिन क्लियर है ना। इट्स क्लियर। सर ये पॉइंट कितने दिन लगाने हैं? ओके वेट वेट, सर सभी Please explain once again ना। Flat. आपको बस पैर को देखना है कि पैर कैसा दिख रहा है। प्लीज आपको बस ये देखना है कि पैर दिख कैसा रहा है, कैसा दिख रहा है पैर। एक मिनट देखिए, पैर बाहर की तरफ अंदर की ज्यादा दिख रहा है कि अंदर की ओर ज्यादा दिख रहा है, बताइए फ्लैट फुट में। अंदर की तरफ, कैसे अंदर की तरफ बताइए? बाहर की तरफ, बाहर की कौन तरफ। खींच रहा है? हड्डी अंदर की तरफ। हाँ ठीक है, नहीं आप बाहर राइट, की यू आर तरफ, राइट। छोटी उंगली थोड़ा बाहर। सर ऊपर को खींच रहा है, बाहर की तरफ। मतलब आप जो सोच इमेजिन कर रहे हैं वो सही है, लेकिन अब ये बताइए कि पैर को कौन सी तरफ खींचा जा रहा है? छोटी उंगली की तरफ, मतलब इनर आप साइड खींचा जा रहा है और छोटी उंगली ऊपर नीचे की जैसे। तरफ टाइट एक हो रहा काम है करिए, ना। आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए जरा, स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े होइए, सरबजीत जी खड़े हो जाइए। नहीं खड़े हुए, अब ऐसे करिए, अब पैरों को ऐसे करिए, ऐसे करिए, दोनों पैरों को ऐसे करिए, अंदर की तरफ से दबाइए, 50-40 दबाइए, तो बाहर की तरफ ऊपर उठ रहा है ना। Yes. तो हम कह रहे हैं कि UB62 टाइट ज्यादा स्ट्रांग हो Yes. गया तो ऊपर उठा रहा है ना। UB62 is more strong because Okay. UB62 on the side, okay? Okay. तभी तो पैर अंदर आएगा ना। तो अब हमें क्या करना है, इसे सेडेट कर देना है वापस, Yes, नीचे ला। Okay. इसे सेडेट कर देना और किडनी 6 को टॉन कर।
तो हमें कोई भी डिसीज है ना, whatever the condition, if the paralytic patient and all, we will see the condition of foot and then we will decide. Now let's see the root of So one question may I ask? yeah, sure. सर कोई भी एज ग्रुप का जैसे अगर मोर देन 25 मोर देन 30 इयर्स का हो फ्लैट फुट वाला, सो उसको ट्रीट कर सकते हैं इसमें, या कोई प्यूबर्टी एज और यंग बच्चे को ही कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है. Meridian are Okay, sir. tight. We have to balance the meridian. We have to relax the muscle. And slowly we can Sir. see, and that's why in the day 1 or day 2 we have seen EOV can treat the hereditary disease, the congenital disease, the disease which is untreated by other system, which can be treated by EOV. Yeah. Okay. Now, Sir, can I ask you a question, sir? yeah, please. I have got flat-footedness. My both my feet go inside as shown in the picture. Yeah. But I also have sciatica pain. So for sciatica pain, I was tonifying UB62 and sedating K6. Okay. But then I've got this flat-footedness, which my leg goes this way. So you're So now you're saying I have to. yeah. So what we'll I've do? got. Wait for some time. Yeah. We will discuss a little more. Then you will understand. Right? Okay. Yeah. Because I've got both. It is contradicting. I've got sciatica pain and I've got this flat-footedness also. Yeah. Even we can see kidney 6 also working very nicely for the sciatica pain, because yin heel vessel and the yang heel vessel working together, we will understand everything, right? Let's discuss a little Thank you, more sir. about the yang heel vessel. So this is the yang heel vessel. We can see here. अब हम देख रहे हैं ये हमारी yang heel vessel है. The yang heel vessel is, this is the path of the yang heel vessel. ये yang heel vessel का pathway है. We can see starting from here, from the bladder 62 and ending on gallbladder 20. कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ खत्म हुआ? देखिए, starting from the bladder 62 and ending on gallbladder 20. This is the yang heel vessel. There are many names like yang heel vessel, yang bridge vessel, yang motility vessel, who accelerator of the yang Walker vessel, yang stents channel. Right? There are many names. If we see the root, we can see bladder 62, then the bladder 61, then the bladder 59. The bladder 59 is one of the great points, because bladder 59 is the G cleft point or the medical emergency point of yang heel vessel. Bladder 59 हमारे yang heel vessel का एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, जिसे हम जी क्लेफ्ट पॉइंट भी कहते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि जब किसी को साइटिका का पेन होता है तो हम इस चैनल का प्रयोग करते हैं. वी आर यूजिंग दिस चैनल इन द साइटिका पेन, राइट? So what happened sometime, bladder 59 is one of the great point giving wonderful result in the sciatica pain, because bladder 59 is the G cleft point. Single point will give quick effect in the sciatica pain. Now if we go up, we can see we are reaching on the gallbladder 29. हम gallbladder 29 पर पहुंच रहे हैं, right? So in this way, it's a passing through the lateral side of the abdomen. हमारे पेट के lateral side से निकल रहा है. We can see here this channel. Then it's going on the back side of the axilla. हमारी axilla के पीछे से जा रहा है. Then meeting on the SI10 and LI15. LI15 हमारी कंधे का point. LI15. LI16 also on the shoulder. Then it is crossing the sternocleidomastoid muscle. We can see here how that it's crossing the sternocleidomastoid muscle on the lateral side of the neck.
हमारी गर्दन के लेटरल साइड को क्रॉस कर रहा है. Then it's passing through the stomach channel and meeting on the urinary bladder 1. And from the urinary bladder 1, it's going on the back side and ending on GB20, gallbladder 20 पर एंड हो रहा है. अभी मैं क्या करूंगा, मैं आपको 1 मिनट के लिए इमेज दिखाऊंगा और फिर मैं इमेज हटा दूंगा. आपको जितने पॉइंट्स याद रह जाए उतने लिखना है अपनी नोटबुक और ग्रुप में डालना है. फिर मैं एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करूंगा. We will discuss each and every single point because each and every single point is having a special effect. Like what bladder 62 can do, what bladder 61 can do, what bladder 59 can do, what we can do with the help of GV29, what we can do with the help of SI10, LI15, LI16, stomach 4, stomach 3, stomach 1, gallbladder 20, each and every point having a special effect. जैसे कि GB20 हम जानते हैं कि बिंदु को निकालता है कि नहीं निकालता है, इसलिए यांग हील वेसल बिंदु को निकालता है, राइट. स्टमक 4 हमारे हंगर पर काम करता है, इसलिए यांग हील वेसल हंगर पर काम करता है. इट्स वर्किंग ऑन द हंगर, राइट. Okay, so I will show you image for 10 seconds. See the image, write down all the points and put in the group. Your time starts now. Yeah. ओके, चलिए डालिए ग्रुप में डालिए, जिस ग्रुप में भी आप हैं डालिए. अब हम बात करते हैं, अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं. अब मैं आपको दिखा देता हूं, फिर हम एक एक पॉइंट की कहानी स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट. So this is the pathway of yang Koimai channel, or we are telling internal pathway. So originate from lateral side of the heel or bladder 62. Then going to the bladder 61. Then going toward the lateral malleolus, हमारे lateral malleolus से जाता है. फिर हमने कहा it's going to the bladder 59. Then it's going on the lateral side of the thigh, means on the gallbladder meridian. Then reaching to the gallbladder 29. Then it's going on the lateral side of abdomen. Then the back side of axilla, shoulder. Then the corner of mouth. Then reaching to the bladder 1. Okay, in the bladder 1, it meet with yin heel vessel. Bladder 1 पर ये अपने yin partner से मिलता है, yin heel vessel से मिलता है. Then it's following the urinary bladder channel. हमारे brain में UV channel को follow करता है. It's following the UV channel. Then reaching to the gallbladder 20. हमारे gallbladder 20 पर पहुंचकर then enter in the brain. फिर हमारे brain में enter कर जाता है. Got it? ये इसका पाथवे जो मैंने रिपीट किया, बस और कुछ भी नहीं. आपको समझ में क्विकली आ गया होगा, राइट? So we have to understand the pathway very clearly now, so that your all the question will automatically will resolve. जब आप पूछेंगे कि यहाँ काम क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ से जाता है भाई, SCM से जाता है. फेशियल पैरालिसिस पे काम क्यों करेगा, क्योंकि भाई फेस से होकर जाता है. किसी को the person is having dribbling saliva. Why it's working on the dribbling saliva? Because stomach 4 also very good point for the dribbling saliva, and it's crossing the stomach 4. Why it is good for head? Because
it's reaching on the UV1, then following the UV meridian, and also following its return, following the bladder channel and the temporal part and reaching on the gallbladder 20. Why it's working on the external bind attack, internal bind attack? क्योंकि ये हमारे गॉलब्लैडर 20 को भी जाकर मिलता है, राइट? देन इट्स इंटर इन द ब्रेन, हमारे ब्रेन में इंटर कर जाता है। तो अब इन पॉइंट्स का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे अगली क्लास में। आप सबका ये होमवर्क है कि आपको सभी पॉइंट्स के बारे में एक एक दो दो पॉइंट्स पढ़ के आना है, राइट? जस्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो बातें पढ़ के आइए सब पॉइंट्स के बारे में, तो आपको क्विकली समझ में आ जाएगा। लेट्स सी हियर व्हाट इज द अबाउट द ब्लैडर 62, you read little bit bladder 61, bladder 59, gallbladder 29, then the point on the back side, the SI10, LI15 and LI16, then stomach 4, stomach 3, stomach 1, then bladder 1 and the gallbladder 20। थोड़ा थोड़ा देख कर आइए ताकि ये रूट आपको एकदम अच्छा याद हो जाए, एकदम मजा आ जाए, आपको समझ में आने लग जाए हर चीज। और जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है इस पैटर्न को लेकर, द पर्सन इज सफरिंग विद शोल्डर पेन, you will understand quickly because this is passing from the shoulder. As soon as the person is telling you, can you treat my shoulder pain, you can use bladder 59 and can give quick effect, quick result. किसी ने कहा कि लेटरल साइड पेट में दर्द हो रहा है, आपने ठीक कर दिया। लेटरल साइड गर्दन में दर्द हो रहा है, चेहरे पर नमनेस आ रही है, so whatever the problem you can work quickly. Is it clear? Yes, Jaiswal ji, yes please. Jaiswal ji, any question? मिस्टर जायसवाल, जायसवाल जी। नमस्कार सर। हाँ बोलिए जायसवाल। सर मेरे दोनों पैरों के थर्ड और फोर्थ टो में नीचे से दर्द होता है और बहुत भयानक दर्द होता है। ओके, तो देखो अभी सब हम धीरे धीरे समझेंगे, राइट? अभी हम जस्ट यू हैव टू वेट, वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ टो में दर्द होता है, उसके कारण ये भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। आर यू एबल टू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। तो थर्ड एंड फोर्थ टो देखो, ये उससे भी कनेक्टेड हो सकता है, किडनी से भी कनेक्टेड होता है। हमें सारे पाथ डिस्कस कर लेने दीजिए, तब आपको समझ में आएगा, राइट? जब तक आप क्या करिए, अगर आपको फर्स्ट सेकंड आपका थर्ड फोर्थ टो में दर्द है, तो जब तक आप क्या करिए, थर्ड एंड फोर्थ टो में हमारा स्टमक एंड गॉलब्लैडर मेरिडियन जाता है, राइट? तब तक आप उस तरह से ट्रीट करिए जब तक हम उसका एक पूरा ढंग से विश्लेषण ना करें, राइट? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा स्टमक मेरिडियन, हमारा जो स्टमक मेरिडियन है सेकंड टो में जाता है, राइट? वो भी ये अपने ये इन साइड से होता है सर, तलवे के साइड से। हाँ सोल में पेन है तो जैसे सोल में नहीं है सर पेन, सिर्फ ये दो ही सोल में पेन है जगह। तो किडनी से कनेक्टेड हो सकता है वो। ये अगर हम इसमें बहुत सारे रूट्स अभी हमारे आने वाले हैं। चोंगमो का अलग रूट होगा, यीनील बेसल का अलग रूट होगा, यांगील बेसल का अलग रूट होगा। तो लेट मी फिनिश ऑल, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, ठीक। सो इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है। सभी लोगों का होमवर्क है। लास्ट में कुछ बोले ही नहीं मैं। लास्ट में सरबजीत जी क्या चूक गया, क्या मिस हो गया? नहीं, नेट लॉस्ट हो गया था ना, तो कुछ आपके वर्ड्स हाँ, तो वो जो कुछ बोल रहे थे ना आप लास्ट में। मैं ये बोल रहा था कि इसको हम समय आने पे समझेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ सारे रूट्स बताना बाकी है। एक बार आपको सारे रूट्स पता चल जाए, यस यस, आप देखिएगा कि कौन सा ट्रीट कर सकते हैं हम, है ना? ये मैं कह रहा था।
और जब तक आपको नहीं सर पता है तब तक आप बहुत सारे आपके पास मेथड हैं। आप चाहें तो 10 बैलेंस मेथड यूज कर सकते हैं कि अगर पैरों में तकलीफ है तो हाथों में ट्रीट कर दो। जैसे ये हमारे अगर पैर है, ये पैर है, ये पैर का अंगूठा, ये पैर की पहली ये दूसरी उंगली, ये तीसरी चौथी, इनको तीसरे चौथे के बीच में दर्द है, यहाँ पर पॉइंट लगा दो। ये 10 बैलेंस मेथड। या फिर आप बहुत सारे मेथड्स हैं, आप पता फाइंड आउट करो, डायग्नोसिस करो क्या प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करो। तो डायग्नोसिस करने के लिए आपको सर हाँ सर ये आपने बोले पॉइंट्स एक एक दो पॉइंट्स पढ़ना है, ये कहाँ से पढ़ना है? गूगल में सर्च करके आएगा या कोई और हाँ, तरीके? आपके पास कोई बुक हो, गूगल हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो आप। हेलो, हाँ, कहीं से भी पढ़ सकते हो आप। आपके पास आप ठीक है सर, ओके। एक्यूपंक्चर की जो नॉलेज तो हर जगह भरी पड़ी है। व्हाट्सएप में कितनी कितनी किताबें घूमती रहती हैं। या फिर गूगल में भी पढ़ सकते हो। आपको ज्यादा बस इतना पता रखना है, एक बार क्विकली आपको देखना है इस पॉइंट की लोकेशन कहाँ पर है हाँ और जी, ये पॉइंट क्या करता है। बस एक दो लाइन पढ़ लेना है, थोड़ा थोड़ा, बस ज्यादा नहीं। ज्यादा मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है? ठीक है सर, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके फाइन। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। लेट्स क्लोज द सेशन।